हेलो यूके, यूरोप और अमेरिका के प्रिय दर्शकों, लेट अस टॉक हिंदुइज्म में एमए टीवी के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर ब्रिज मोहन गुप्ता और आप हमें 19 साल से पूरा ब्लेसिंग दे रहे हैं जी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपना आसन ग्रहण करें और भगवती माँ के चरणों में ध्यान लगाएं। मेरे साथ मेरे साथी, मेरे परम मित्र श्री वीरेंद्र चौधरी जी विराजमान हैं। नमस्कार। जो कि इंडो ब्रिटिश और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे पैनी नज़र रखते हैं, विश्लेषक हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, अपनी कमेंट्री देते हैं। हम इनका इस मंच पे हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ वीरेंद्र चौधरी और जैसे गुप्ता जी ने बताया कि हम एमएटीवी के माध्यम से लेट अस टॉक हिंदुइज्म कार्यक्रम के द्वारा आपकी जानकारी और हिंदुइज्म के बारे में जो भी बातें आप तक पहुंचानी आवश्यक होती हैं उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फलने फूलने के लिए जो भी प्रयत्न, जो भी कुछ हम इस मंच से कर सकते हैं हम करते हैं। और गुप्ता जी इस कार्यक्रम को लगातार 18 से अब 19 वर्ष हो गए हैं, लगातार तन मन धन से इस कार्यक्रम की जो शोभा है इसको बढ़ा रहे हैं और आप तक हिंदुइज्म के जितने भी कार्यक्रम जो भी इस देश में होता है और दुनिया भर में होता है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो हर रविवार को रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक दिखाया जाता है। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और आभार। हमारा आप जहां भी हैं साथ निभाइएगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका। हमने इसी टॉपिक पे पिछले सप्ताह भी पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया था जी। और चौधरी साहब हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष का भाव जो है वो मन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसलिए कि प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों के फ़ोन आए जी, पॉजिटिव उनका व्यू था हमारे प्रोग्राम के बारे में। बिल्कुल कि हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया और अपना जो बीबीसी फेक न्यूज़ जो न्यूज़ दी, नेगेटिव न्यूज़ जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया और एंटी हिंदू, ये इसके बारे में नैरेटिव यही था जी। और इतना घटिया परसेप्शन देने का प्रयत्न किया जी कि जैसे कि वो आज भी इंडिया पे रूल कर रहे हो। हाँ जी। पहले अगर आपको याद होगा, हम जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी तो उस समय ऐसा कुछ माहौल था कि भारत के चैनलों पर कुछ भी आता था तो लोग विश्वास आसानी से नहीं करते थे। और हमेशा हम देखते कि बीबीसी न्यूज़ लगाई है, हाँ, लंदन से बीबीसी न्यूज़ लगा करके, तो वहां से हमने देखा और तब लोगों ने विश्वास किया कि वाकई ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। तो इतना विश्वास था बीबीसी पर। लेकिन आज इन्होंने ऐसे फेक नैरेटिव चला करके अपनी जो विश्वसनीयता है उसको कितने नीचे के स्तर पर ले आए हैं, ये आप सबके सामने। ए ब्लैटेंट, मैलिशियस, बिल्कुल नेगेटिव परसेप्शन क्रिएटेड फॉर इंडिया। बिल्कुल। इंडिया जो कि 5वीं
वर्ल्ड में इकोनॉमी बन रही है, बिल्कुल। और यहाँ से ऊपर, जी हाँ, ब्रिटेन को ब्रिटेन से पीछे छोड़ ऊपर, के, ब्रिटेन को पीछे छोड़ के, जी ऐसा लगता है कि इनको ये हजम नहीं हो रही। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ग्रोथ रेट जो है वो 7% इस समय चल रहा है, भारत का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के हिसाब से। तो अमेरिका का देखिए 4 या 5 के बीच में होगा, बाकी सब इससे पीछे हैं। और ये भी इनको एक बहुत बड़ी है कि ये कैसे हो रहा है, जिस पर हमने गुलामी, इतने साल गुलाम रखा, वो कैसे इस स्तर तक पहुंच रहे हैं। These 2 documentaries, जी, you know, they have enraged the entire Hindu and Indian diaspora. बिल्कुल बिल्कुल। And what happened in the BBC offices of sending apology बिल्कुल from BBC. हाँ। And also there was a call that BBC should be internationally investigated. Yes, because the taxpayer money is using, because it's wasting taxpayers' money. जी, We pay tax, to watch BBC. To watch BBC. And बिल्कुल। they are wasting. The BBC is wasting taxpayers' money, बिल्कुल। So we also demand that these documentaries should be removed from the archives of BBC. And apology we demand apology जी, for creating such a biased and negative perception among the whole world. बिल्कुल। It has created hatred between the Hindu and the Muslim community in this country. And in India as well. The same policy of divide and rule. जी, They have started again. I was listening to watching another TV and in Indian channel, and they were showing के इस BBC डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए था या नहीं चाहिए था, इससे नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। लेकिन नुकसान तो इससे, अगर इसको दिखाया जाता वहाँ पर, तो नुकसान हो सकता था कि हिंदू मुस्लिम्स के जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते थे, क्योंकि हर कोई डिटेल से नहीं, वो सिर्फ टीवी का विजुअल देखते हैं या बात सुन के उसी पर अपना नैरेटिव चला लेते हैं। तो नाउ वी विल, प्रिय दर्शकों, नाउ वी विल शो यू सम विजुअल, so that you can understand the sentiments of the community. बिल्कुल। The first visual we are showing you is from a senior diplomat of Syria, Faisal Mcdad, a Syrian diplomat. What he says about Prime Minister Modi and India, you can see it. Please look at it and एकाग्रचित हो करके इस जेंटलमैन को सुनिए। कृपया पहला शो विजुअल। We really appreciate the contribution of India, the humanitarian contribution of India. More than half a ton of rice was sent to Syria by India at the difficult time where Syrians did not find food to eat, did not find rice to eat. Now India is taking the task of helping Syria rebuild. There are hundreds of scholarships from ITEC given to Syria. There are thousands of scholarships given each many years to rebuild our educational system. And at a time when humanity does not mean anything for Western powers, we found all human noble concepts prevailing in Indian foreign politics. It's not only in Syria. It is, for any country that is suffering. India is not a country that hesitates when the question comes to helping people get free, get democratic, and get more independent. So all the principles that apply to India and the Indian people by the Indian government are also applicable by India to other countries and nations. तो आपने देखा कि वो क्या कह रहा है कि इंडिया ने हमें राइस दिया,
इंडिया ने हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी मदद करे, जी, तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक खबर और कौन दे सकता है। उनके मुखारविंद से सुना आपने, और वो भी एक मुस्लिम कंट्री और वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, सीरिया, और खुद इस वक्त सीरिया जो है वो प्रॉब्लम में है। जी, यही नहीं, आप तो आपने सुना होगा कि भारत ने जो है वो नेजल वैक्सीन भी डेवलप कर ली है। वो बात बाद में करेंगे चौथा। जी, बहुत कुछ किया है जो कि लोगों को पता होना चाहिए। तो दूसरा जो विजुअल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक बहुत एनलाइटेंड जो के पेपर्स और मीडिया जी, के बहुत बड़े एक मेंबर हैं, पालकी शर्मा। आप उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। पालकी And now शर्मा। let me show you some recent headlines from Britain. Coal power stations fired up. Customers paid to cut energy use. UK faces worst and longest recession in G7. Prince Harry details physical attack by brother William in new book. Do you see what they're dealing with? A power crisis, a recession, and endless drama in the royal family. And yet, when their national broadcaster, the BBC, chooses to make a documentary, this is the subject they pick. India, the Modi question, that is the title. It talks about India's Prime Minister Narendra Modi. This documentary has triggered sharp reactions. I'm sure you've heard about it. Many of you asked us to take this up on Vantage, and here we are. Let's begin with an introduction of the BBC, the British Broadcasting Corporation. It was launched in the year 1922 as a mouthpiece of Imperial Britain. It's a public service broadcaster. It runs on taxpayer money, and it operates under a royal charter. The last few years have been tough for the BBC. There's a cash crunch, job cuts, and a growing list of controversies. They lied to get an interview, that famous interview with Princess Diana, the one where she talked about her failed marriage to now King Charles. The BBC had to apologize for that interview, for deceiving Diana to get a scoop. And as we speak, the BBC chairman is being investigated. What for? Conflict of interest. Richard Sharp is the BBC chairman. He's said to have helped former Prime Minister Boris Johnson secure a loan worth $900,000. Sharp says there was no quid pro quo. And I won't get into the case. This was just to show you what an illustrious record they've had. Now to the documentary they've done. We haven't seen it, and we don't plan to, but it has made quite a splash. If the idea was to grab eyeballs and to trend, they have succeeded. But at what cost, we ask? The documentary purportedly talks about the 2002 Gujarat riots and implicates the Modi government. He was then Chief Minister of Gujarat, the state of Gujarat, in 2002. This documentary is the BBC's opinion piece. And here are the facts. The Gujarat riots were investigated by a Special Investigation Team, or SIT, appointed by the Supreme Court of India at a time when the Congress party was in power at the centre. Mr. Modi was at the centre of this probe. Like I said, he was the Chief Minister of Gujarat, and he was given a clean chit. Let me rephrase that. A Supreme Court appointed team cleared Narendra Modi of all charges. This was in the year 2012, well before he became the Prime Minister of India. Last year, the Supreme Court scrutinized the report once again. A plea was filed, a 3-judge bench heard the arguments, and again they gave a clean chit. The judges had a simple question to answer. Were the riots the result of a larger conspiracy? Allow me to quote what the judgment said. The Special Investigation Team has not found any conspiracy. No material was discovered pointing towards any meeting of minds. The riots across the state had taken place spontaneously. India's highest court has said this, and I will not dwell on it anymore because none of this is news anymore. Only the BBC thinks it is, so they've dedicated a full show to it. And it has generated a response. UK Prime Minister Rishi Sunak was asked about it. He said he disagrees with the characterization. Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. No. The US State Department was asked about it. It says
it hasn't even heard about the documentary. I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India. But one of those additional elements are the values that we share. Well, what about India's response? New Delhi decided to ban the documentary. Now, we're not sure how effective a ban is in this day and age and how advisable it is in any age. But a better way, we say, to counter this propaganda will be to set the record straight and reclaim the narrative, which is what we hope to do through this show. Meanwhile, if we may, here's a Republic Day gift from India for the BBC. A list of suggestions for the BBC for their upcoming documentaries. Number 1, the Kohinoor and the colonial loot. Number 2, an outdated monarchy and unhealthy obsession with the royals. Number 3, racism in 2023. We're waiting. तो प्रिय दर्शकों, आपने सुना पालकी शर्मा जी के जो विचार हैं, जिस fearlessly, clearly, She is telling the truth. she is telling the truth. ऐसा लग रहा था जैसे कि हम आज भी बीबीसी नहीं, ब्रिटिश फेक बेशर्म कारपोरेशन के अंडर काम कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो, अब हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं। वहाँ के एक योगी पॉलिटिशियन, what he feels and thinks about Prime Minister Modi ji, because he says he himself met him in Gujarat and he saw clarity and charisma. You know, the real Narendra Modi, a repository to the BBC's propaganda on India's Prime Minister, Mr. Modi. You can hear him say what he says about our most honest or most, you know, क्या कहें चौधरी साहब, हमारे पास तो शब्द नहीं शब्द है भी कि नहीं कैसे है। उनकी ईमानदारी और उन पर जो देश को जो उनके ऊपर भरोसा है, उनकी दयानतदारी, ईमानदारी, बिल्कुल, और 18-18, 20-20 घंटे लगातार काम करना, आज तक 9 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। समस्या ये है कि इनके खाने के जितने दरवाजे थे वो बंद हो गए। अब मोदी जी खाने नहीं दे रहे, वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही हो रहा है। अब एक शब्द भी आज तक उनकी ईमानदारी पे ये नहीं कह सके। कोशिश कर ली पूरी, बिल्कुल पूरी कोशिश कर ली, यू नो। तो अब आप स्वयं उस अमेरिकन योगी के मुखारबिन से सुनिए वो क्या कह रहे हैं, प्लीज। Namaste. Welcome to Vedic Vidya. My name is Jeffrey Armstrong, Kavindra Rishi. Vedic Vidya is available exclusively on Chitty Media English channel on Sunday nights, 7 p.m. IST. Our topic tonight is, who is threatened by India's Prime Minister Narendra Modi? Who is threatened by India? Let's start there. Have they been waving nuclear weapons at the rest of the world? I don't think so. Have they dropped any on other cultures? No.
Not at all. Who did? Oh, the United States. Oh, okay. So the United States is dangerous. But Narendra Modi hasn't been threatening the rest of the world since he's been in office. Now, it's true that I am not from India. So I'm no expert on the politics internally. But I've been watching and paying attention, and I met Narendra Modi before he became prime minister. And I know his history. And by the way, if you think India has a caste system, would you explain to me why Narendra Modi's father had a tea shop? He was a chaiwala? Is that the caste that you're born into that makes you prime minister next? So just a sidebar, but I'd like all people who think that India has a caste system to sit up and salute and say, oops, we were wrong. Because Narendra Modi has a completely unlikely parentage for becoming the prime minister. So in case you haven't noticed, one thing that he does have is a profound character and depth of being and dedication to higher principles, to higher truths. Now, there are some people who are just afraid of anything other than their own viewpoint, or at least they speak badly. So the first thing I want to point out is that Narendra Modi is known for having a very high character, known for being a dedicated practitioner of the Hindu Dharma. But there's nothing in the Hindu Dharma that should make the rest of the world afraid. So why should they be afraid of India? Well, one reason would be because when Narendra Modi took office, he was the first prime minister of India to actually be Hindutva. Oh, I know, that's another demonized word. Ooh, Hindutva. The Hindutva simply means a dedicated Hindu practitioner. I am one. I am Hindutva. Narendra Modi is the first leader of India for over 1,000 years who is Hindutva. But the culture of India is Hindu, Vedic, Sanatana Dharma. So he is actually the first leader in 1,000 years that wasn't either colonizing or India under attack or India being fragmented by people from the outside coming in and attacking it, which is Muslims, Islam. Islam didn't come in as friends. They came in as rapists, raping, pillaging, taking slaves, killing. They didn't come in a friendly way. They're not indigenous to India. Christianity is the same way. Christianity has been colonizing India ever since the British took it over and acted as if they owned it for a couple of hundred years. Raping, pillaging, taking everything that they could. When I say raping, I mean just taking everything. Now, that kind of behavior is something one should be afraid of. So yes, it's a good question. Why would anyone be afraid of Narendra Modi? Well, perhaps they think that he will be vindictive and then he'll come after them. Do we see any evidence of that? No. What do we see? That he's standing for the principles of the culture. Now, should that make people afraid inside of India? No. And why? Because the Vedic culture, the Hindu culture. तो आपने सुना
in 1,000 years, he is somebody, Narendra Modi, who has brought out in a very clear manner the dharma, the culture, Sanskriti, of India. बिल्कुल. So who is threatened by him? Not we, not anybody, but those who created a perception, who wanted to destroy his image, who wanted to show him in a negative sense, negativity, because he is the president of G20, which is going to start very soon, and also the president of Shanghai Cooperation Organization, SCO, which is having a meeting in May in New Delhi of all the foreign ministers. So प्रिय दर्शकों, हम और बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, पर हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना पड़ रहा है. यूं गए और यूं आए, जाइएगा नहीं. There is a lot more very interesting and watchable to follow. Stay tuned.
प्रिय दर्शकों, छोटी सी ब्रेक के बाद लेट अस टॉक हिंदुइज्म में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आपको कुछ विजुअल दिखा रहे थे अपने जहाँ कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता के बारे में हमें परिचय दे रहे थे अपने मुखारबिन से। जी। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आज के जो प्रोटेस्ट लंदन में और 6 शहरों में हुए, उनकी स्ट्रेंथ, उन भक्तों की यूनिटी, उसको देखते हुए दिल्ली से बहुत बड़ा चैनल इंडिया टुडे, जिसे हिंदी में कहते हैं कि आज का भारत जी, वो क्या कहते हैं, उनके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए, जो कुछ उन्होंने देखा वो अपने मुखारबिन से आपके सामने वो पेश कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए और सुनिए प्लीज़। इंडिया टुडे की न्यूज़ आज की। Breaking news on your screen. The Indian diaspora holding massive protests against the BBC in London, against the docu-series. Pro-Modi chants on London streets can be heard. Huge protests as the Indian diaspora comes out in large numbers to protest against the BBC docu-series. Remember, there is a private controversy around the BBC docu-series around Prime Minister Modi continuing to rage on. There you have the Indian diaspora in London come out to the streets, take to the streets in protest today against the docu-series and against the BBC for releasing this film. Remember, it tackles issues as old as 20 years ago, bringing back to light, of course, all of the allegations around Godhra and so forth. And there's also a part 2 of the series that's currently been released, while the first part, of course, has already been banned across certain platforms. So the much hyped and controversial series is creating all kinds of reactions around the world. In India itself, we saw students protesting the ban last week. Today we are seeing Indian diaspora out on London streets as well, protesting the docu-series and protesting outside the BBC headquarters in central London. You can see them holding banners, you can see them also chanting pro-Modi chants as they protest outside the BBC. And remember, the BBC headquarters are in central London. You can see a whole host of the Indian diaspora gathering in large numbers outside those headquarters in protest. No major scuffles, violence or anything of the sort reported. It's mostly them shouting slogans, holding up banners and really sharing their angst against this docu-series on Prime Minister Modi.
Lavina Tandon joining us live from London. Lavina, thanks for being with us. Just take us through what you're seeing on the streets. Have you been speaking to some of these protesters? What are they saying? I'm also intrigued, why have they taken to a Sunday to protest? It must be pretty quiet at the BBC on a day like today. It being a news organization, I must say that it's never quiet in a news organization. Yes, relatively, yes, but also after speaking to a lot of people, and there are many, let me just take you around and show you. There are loads and loads of people here. A lot of them can come on a day like this, a weekend. That is the reason, the answer to your last question. But let me just take you to some people who are extremely enraged, who are with me right now, and they will tell you in their own words, why is it that they would want something like this to happen? Yes, go ahead, please. We are protesting today because BBC is giving fake news against Hindus always. This is not the first time, and I think we together united. I think we'll stop paying them. Teach them a lesson, otherwise nothing is going to work. And what is it, what all has happened which makes you say that they are against the Hindus? Yeah. So the fake documentary, two-part documentary against Modi, which is he's been cleared by Supreme Court of India. So who is BBC to judge? And they should correct they should correct unless we're not going to pay them. Okay, so the lady here telling me that they're not going to pay the license fee, which is what is required, mandatory at this point in time, and BBC is a part of that conglomerate to receive a part of that incentive to run the organization. So they say if they continue to with documentaries like these, where they feel it is insinuating a person who has already been cleared by the Supreme Court of India, and there is no right, and the timing of it as well. So please, I'm here joined by Jay, who's a part of this protest that's happening. We have come slightly away because it's very, very loud outside there. So tell me, what is it that enrages you, the timing of it, and also, would it not be morality on the basis of which this question can be raised against the Prime Minister? How would you react to that? We are so much disappointed that BBC, we have been from childhood, my forefathers, they were watching BBC as an incredible source of information, and they valued it so much until now. But until very recent year, in the last 10 years, we have seen there is a bias in BBC. They are discriminating particularly against. All right, we're going to continue to bring you updates there, but we have to take a very quick break. Thanks so much, Lavina, and do stay tuned. We'll be back with more on the other side. तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि कैसे इंडिया टुडे ने आज के प्रोटेस्ट को कवर किया है, किस खूबसूरती से उन्होंने बताया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इंडियन सुप्रीम कोर्ट जिसने के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सोनरेट किया,
क्लीन चिट दी, उनके विरुद्ध कुछ भी वो प्राप्त नहीं कर पाए। वो एसआईटी जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्वयं की मॉनिटर्ड बॉडी थी, एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 9 घंटे तक रिगरसली ग्रिल किया, लगातार 2-3 दिन तक चलता रहा। और वो अकेले गए, कोई वर्कर नहीं, अपनी पानी की बोतल भी अपने घर से लेके गए। जब 12-1 बजे का समय हुआ तो एसआईटी के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि मोदी जी, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ लंच। उन्होंने कहा मुझे लंच की ज़रूरत नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन कीजिए। रात के 11 बजे तक रिगरसली उन्होंने ग्रिल किया एंड दे फाउंड नथिंग। उसके बावजूद बीबीसी ने एक फेक, मिलिशियस, नेगेटिव, फ्लूक, बेसलेस, विदाउट एनी फाउंडेशन दो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। हमारे इस मंच से डिमांड है कि उनको बीबीसी की आर्काइव से निकाला जाए। हाँ। और वी आल्सो डिमांड एन अपॉलॉजी फ्रॉम बीबीसी। बिल्कुल। हम बीबीसी को मैं स्वयं बचपन से इंडिया में बीबीसी को किस लिए देखता था कि बीबीसी इज ए न्यूट्रल बिल्कुल बॉडी व्हेन एक्सप्रेसिंग द न्यूज। कॉल ले ली। हेलो ओके। अगर आज के तो आप जी आज के जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसको अगर हम समरी से, प्रोटेस्ट के बाद यहाँ के अखबारों ने किस तरह से लिखा है उसका मैं अगर संक्षिप्त में आपको ब्यौरा दूं तो इसमें कहा गया है कि हंड्रेड्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंडियन डायस्पोरा ऑर्गेनाइजेशंस gathered outside BBC headquarters in central London. Today it was very cold, but people still turn up. There were lots of elderly people and young people. Some are saying only young, there was no young people, but if you see the documentary, you must have seen more than 50% were young people there, and lots of people came to protest there, and this protest has been the biggest protest if you look at the history of protest. तो अगर हम बात करें और स्पेशली एंटी हिंदू जो ये था और एंटी इंडिया जो नैरेटिव बीबीसी ने किया था, इसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। तो इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि द चलो बीबीसी प्रोटेस्ट वर कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस बीबीसी स्टूडियोज इन लंदन, बर्मिंघम, ग्लासगो, Newcastle and Manchester. Yes. Call. Hello, sir. May I know who is speaking and from where? I'm speaking from London. Most welcome, sir. Sorry. स्वागत है आपका। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? Yes. Hello. यस, आपकी आवाज आ रही है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सिर्फ फोन से बात करें। बंद कर दिया जी, फोन बंद कर दिया। अब बात करिए। मैं कहता हूँ कि एज ए हिंदू, every Hindus here in London should stop watching BBC news. That's all. Thank you. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हर सब मिलके रहते हैं। बिल्कुल।
रूल्स, डिवाइड एंड रूल्स हमारे पास में नहीं है, हमारे ब्लड में नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर हिंदू को और हर हिंदुस्तानी को कि बीबीसी मत देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। तो आगे लिखते हैं अखबार के द प्रोटेस्टर वेव्ड देयर प्ले कार्ड रीडिंग बाइकआउट बीबीसी ब्रिटिश। दिस इज नॉट बीबीसी, दिस शुड बी कॉल्ड एज ब्रिटिश बायस कॉर्पोरेशन एंड स्टॉप द Hindu phobia narrative and they chanted slogans such as shame on BBC and Bharat Mata ki jai. ऐसे नारे वहां पर गूंजते रहे आज। The documentary on Prime Minister Modi was very biased given that he was completely cleared by the Indian judiciary and yet the BBC decided to become judge and jury. Hello. 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 May I know who is speaking and from where? I'm calling from East London. गुप्ता जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है। स्वागत है आपका। गुप्ता जी बस मैं यही बात करनी थी, जो भी हम तो मोदी को दिल से चाहते हैं ना। हाँ। हमारी तो जान है वो। बिल्कुल। पर लोग उसके बरखिलाफ आपको तो पता ही है। हाँ जी। अब लोग हिंदुस्तान का कहीं से कहीं लेके जा रहा है, सब लोग उससे जेलस करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। उसने बस ऐसा ये गलती कर दिया, उसने हिंदुओं को जीना सिखा दिया। तुम्हारा ये स्थान है, आप किधर घूम रहे हो? बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सत्य जी हम तो उसको जान भी है, उसके लिए हाजिर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीबीसी एक और लिखा हुआ है इन्होंने कि द बीबीसी नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इंटरनेशनली एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ बीबीसी should be investigated for failing in their duty as a public broadcaster. Yeah, good. Another protester said that she had come with her wheelchair-bound mother because they felt strongly against the false and anti-India propaganda. They felt it was necessary, and this is being spread by the British broadcaster, the fake narrative against Narendra Modi and against India. थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। एंड हमारे पास अब समय बहुत कम है, पर इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन लोगों से मिलाऊं जो बीबीसी की फेक डॉक्यूमेंट्री में अपीयर हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ, स्ट्रेट ऑन द टॉपिक। नंबर 1, जो पहला आदमी है वो है जाफरी कनेक्टेड विद वायर। दूसरा है हरतोष सिंह बल, द कमेंटेटर फ्रॉम अनदर मोदी बैशिंग सेटअप। ही इज फ्रॉम कारवा। हेलो हु इज स्पीकिंग एंड फ्रॉम वेयर प्लीज? माय नेम इज Brij Gupta. I'm calling from Oxford. Very nice of you, Mr. Gupta, after a long time. या आपसे मिला हूँ जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए थे। हाँ। तो आपने उनके स्वागत में साउथ हॉल में फंक्शन किया था, उस वक्त का मिला हूँ मैं आपसे। और आज आप ये प्रोग्राम करके मेरा दिल खुश कर दिया। आपने ये मोदी जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, भारतवर्ष बनाना चाहते हैं, और लोग उसमें बहुत त्रुटियां डालते हैं। बिल्कुल ठीक। 800 साल मुस्लिम लोगों ने, 200 साल अंग्रेजों ने राज करके हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, लूट लिया। अब पहली बार कोई आया है जो हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को नाम दे रहा है, और उसके जलन में सारी दुनिया जल रही है। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ रहा है। अभी हिंदुस्तान 5वीं औद्योगिक में स्थान में है, 5वें स्थान में है जी। और मेरा ख्याल है अभी ये लोग कह रहे हैं कि 2030 में हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाएगा। थैंक यू गुप्ता जी वेरी मच। ये मोदी जी के खिलाफ ये सारे चल रहे हैं जंग। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं
आप जैसे लोगों की बहुत हम तारीफ करते हैं कि आप मोदी साहब को इतना आगे बढ़ाने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए आप लोग खड़े हैं। मैं आपके साथ हूं, मोदी जी के साथ हूं, हिंदुत्व के साथ हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत तो प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जिन्होंने के प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ा, शशि थरूर जी, वो भी आज कह रहे हैं कि जो यात्रा है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी जी को तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक्सोनरेट कर दिया था। शशि थरूर कह रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, जो ईमानदार और ट्रू भारतीय हैं वो हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करेंगे। अगले सप्ताह एक नए मुद्दे के साथ फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ